Hello guys, welcome to my YouTube channel IT Concepts. This side Akash Arora, and today I am going to take a new video for class 12th IP students, that is regarding Pandas data frame, indexing, lock, iLock and multiple operations on Pandas data frame, right? Till now, three videos I have published for 12th IP. That is first for series creation, then series attributes, and now third is how to create a data frame, multiple ways to create a data frame, right? Now today I will discuss about the indexing of data frame, how to access a data. अगर आपका data frame created है, if you want to access a particular data or part of a data, तो उसको आप कैसे यूज करने वाले हैं, इंडेक्सिंग कैसे करने वाले हैं, स्लाइसिंग कैसे करने वाले हैं, that we will discuss in this video. Yes. Now, what is a data frame? That we already know. That has a 2D data structure. Yes, it is a 2D data structure. One more important, if you have not gone through my previous video, just watch the video first, so you are able to understand what is data frame, how to create it, right? Okay. So these are the rows and these are the columns. These are the indexes. These are the column labels, right? Now, data handling using pandas data frame, indexing a data frame using .loc. .loc क्या कहता है, what is .loc and what is .iloc? These are the two things which is used to access data, which is used to access the data. See, suppose I am creating a data frame. Yes, I am creating a data frame here. Suppose there are five student are there: student A, student B, student C, student D, and student E. Right? Suppose three subjects marks are there: P, C, and M. Okay. Marks are suppose 90, 91, 92, 82, 80, or 70. I'm sorry. Yes. 72, 75, 76, 89, 94, right? Here 77, 87, 97, 82 or 81. This is the data frame, see, right? This name of this data frame is, suppose it is a DF, right? So this A, B, C, D, E, these are called row indexes. Please able to understand, these are called row indexes, okay? If I say P, C and M, this is called column indexes. Understood? So that means we have created a data frame. एक data frame हम लोगों ने बना लिया, इसमें row indexes हैं A, B, C, D and P, C, M are called column indexes, right? Now I have to access a particular value. मुझे एक particular value को access करना है. See, अगर मैं लिखता हूँ print df, suppose if I write print df, so it will print the whole data frame. It will print the whole data frame. Better we should go for some online practice, right? एक online इसी तरीके से हम लोग spider पे program create करते हैं live, तो I can easily able to make you understand, right? See, suppose I am creating the same data frame. How to create data frame? First, import pandas as pd. Okay, this is the library that we know we have to import to create a pandas data frame or series, whatever, right? Df equals to pd dot data frame. Yes, right. Okay, we are creating a data frame. There are multiple methods: डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, राइट? तो अभी आप लोग देखिए मैं कैसे बनाने वाला हूँ. देख, कॉलम कॉलम पी है, कॉलम सी है एंड कॉलम एम है, राइट? थ्री कॉलम्स आर देयर. ओके, so I will write just suppose I am creating a list, okay, or dictionary. In dictionary, one key element is p. In key element I will create a list. This is called list within dictionary. ये सब चीजें मैं already I have explained in my previous video, right? If you have not gone through, you just gone through that, right? In p, how five values are there: 90, 91. See, I can write 90, 91, 82, 81 or 80. These are the values for physics, right? Now the C, that is for chemistry. Again, five values are there. See, five values: 80, 90, 82, 92 and 95. Okay. Now the third column. Yes. The third column is suppose M. Okay. That is for maths. Again, five subjects marks. Okay. 70, 72, 74, 76, whatever random marks I am putting, right? Okay, right. Now these are the marks. Okay, if I go into print, अगर मैं लिखता हूँ print df, see, print df, right?
जैसे आप print df लिखते हैं, what it will be done, see, यस, आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। हाँ, एक बार और देखिएगा, जब भी आप आउटपुट देखते हैं प्लीज पाइथन आई पाइथन कंसोल शुड बी देयर, राइट, तभी आपका आउटपुट शो होने वाला, राइट। तो देखिए पीसीएम इज देयर एंड रो लेवल्स आर 0 1 2 3 4 5 बिकॉज we have not mentioned anywhere. If you will mention the index it will give you, because ये pcm जो है these are the keys, right? तो key will become column, पहले I already told you in a data frame key will become the columns, right? Okay, now I have to create indexes. Okay, so one more thing is there, index equals to 5 index are there, that is a, then b, then c, then d, then e. Okay, right. If I print df, now you can see a b c d e are what, row level, and pcm are the columns level. These are what we have created, right? I hope you are able to understand how to create a data frame. अगर आपका कोई data frame create करना है आपको, तो column को keys बनाइए. See, 3 columns are there pcm. I have created the column as keys and the values are enclosed in a list, right? And then I have to provide the indexes for row labels, right? This is all what we call how to create a diagram, that we have discussed already. Now how to access the value of a data frame. आप value कैसे access करने वाले? See, if I write print, अच्छा सीरीज में ऐसा होता था, इन सीरीज वी कैन एक्सेस द वैल्यू यूजिंग डायरेक्टली यूजिंग इंडेक्स लेबल और इंडेक्स वैल्यू, राइट? इंडेक्स लेबल और इंडेक्स वैल्यू यहां कैसे करना है? सी, if I write print df square bracket, this square bracket is used to access the value, that is short, right? Suppose my column name is p. If I write dfp, what it will be done? See, all the values of physics are got printed, yes or no? I hope you are able to understand कि अगर हम डेटा फ्रेम के स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्टली कुछ लिख देते हैं तो इट विल प्रिंट द पर्टिकुलर कॉलम, दैट इज पी. ओके, आर वी एबल टू प्रिंट द रोज ऑल्सो? सी, हम लोग चेक करते हैं, देखिए डीएफ, अच्छा रोज नेम आर ए बी सी डी ई. ओके, आई विल प्रिंट इट. सी, इट विल गिव अस एरर. ये एरर है क्यों? बिकॉज डीएफ के अंदर अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पास कर रहे हैं, सी आई एम सेइंग पर्टिकुलर लेबल पास कर रहे हैं, पर्टिकुलर लेबल पास कर रहे हैं, तो दैट लेबल शुड बी ऑफ कॉलम, इट शुड नॉट बी ऑफ रोज. The most important, if I am writing df in bracket, if I am writing any row, see any label, actually any label अगर हम लोग print कर रहे हैं तो column label is okay, but in row label we will get the error, right? This is a column label, this is a column label. तो इन column label, जो भी आप column label लगाएंगे तो उस column की सारी values print होंगी, but in row label you will get the error. That error is called key error. Why key error? Because when you write this label, he will search for columns. और columns में कहीं भी A present नहीं है, P present था, P की value आ गई, A is a row label. That's why it will not get printed. तो एक चीज हमें clear हो गया. If I write in square brackets of df any label, that label must be column. Right? Suppose if I write print df, okay. Suppose P colon C. P colon C, that means whenever this colon sign is there, this colon is for indexing slicing actually. ये जो P और A था, ये तो एक particular label था. When I am going for colon, colon means this to this, that means slicing, a continuous slicing, right? So what it will be done? See, if I write this, okay, वो error अभी है तो इसको हम comment कर देते हैं. See, because you know that Python is a interpreter based language, right? तो उसने फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, सेकंड एग्जीक्यूट कर दिया, थर्ड एग्जीक्यूट, बट फोर्थ इट विल गेट एरर. तो आफ्टर फोर्थ इट विल नॉट एग्जीक्यूट. अगर फोर्थ लाइन में एरर है तो इट विल नॉट गो फॉर नेक्स्ट लाइन, राइट? तो दिस लाइन कंटेन्स एरर, सो आई शुड हैव टू डू कमेंट, राइट? दिस इज द कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट. हैश मींस single line comment. This line have put, but it will not be executed, right? See, now yes, what will be done? See, P colon C, P colon C, what it done? P it get printed, but here PCM just column, no indexes get printed, so that means indexing slicing are also not there, it cannot be done, right? So that we have understood. Okay, no issues. Suppose see, name P, d type int, empty data frame, it has given you the empty. So slicing also you can't do this.
You can give a particular column label, एक particular column label आप दे सकते हैं, right? Suppose if I have to print P and M, if I write print df, yes, one more thing, if you want to print particular columns, अगर आपको particular columns print करने हैं which are not in the continuous, so we'll again put a nested list. See, P comma M, P comma M. If I go through this, see, it will print P and M, it will print P and सी अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको दो कॉलम्स प्रिंट करने हैं, अगर इफ यू हैव टू प्रिंट टू कॉलम्स व्हिच आर नॉट कंटीन्यूअस, सपोज पी कॉलन है सी किया था, दैट मींस पी एंड सी आर कंटीन्यूअस, सी यू कैन सी हियर, बट आई हैव टू प्रिंट पी एंड एम, two different columns which are not continuous, so you have to write these columns in a again a square bracket, list within a list. See, df, this is a square bracket, this shows the particular fetch for a value, and if I put again a list, that means these values, these columns will get printed. So I hope you are able to understand. If I write df, series में हम ऐसे करते थे, df, and if I write any column label, it will get printed. अगर आप row label लिख रहे हैं तो it will give you the error. अगर आप slicing कर रहे हैं, it will give you the blank empty data frame. And if you are giving particular data, particular column label, p, m, different columns are there, so it will get printed. I hope you are able to understand how to fetch a data. Now the problem is how to work on a particular row data. Column पे तो हमने work कर लिया, ठीक है, but rows पे हम कैसे work करने वाले हैं? See, if I write print df, that is data frame, okay. If I write 0, what is 0? 0 means I am going for some index value, right? Index, yes, value. See, if I go, you see this, A, B, C, D are index labels. Here 0, 1, 2, 3 and 4. These are called index number, exactly. Or here 0, 1 and 2. These are also called index numbers. Again I am saying, just try to understand, A, B, C, D are index labels, और उन्हीं का डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर भी होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट? सिमिलरली पीसीएम आर कॉलम लेबल्स, इनका भी एक डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर होगा, दैट इज 0, 1, 2. It will always start with 0, right? So if I write print df0, what will it will get printed? See, it will give you again the error. Why it is showing the error? Because 0 is not a column label. 0 is not a column label here. We are not having any 0. We have column label, that is P, C or M. P, C or M. Or 0 index number है. It is not a label, right? It will not work. Okay. If I write 0 column 1, what it will be done? See, ये कुछ error देगा. Oh my God! It get printed. See, क्या हुआ है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज. यहाँ पर A की पर ए जो कॉलम है, ए जो रो है, फर्स्ट रो जो है, दैट विल गेट प्रिंटेड. बट हमने तो कहा था कि यहाँ तो केवल कॉलम्स दिया जाता है. यस, अगर आप लेबल दे रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गिव द कॉलम, बट अगर आप इंडेक्सेस दे रहे हैं, इंडेक्स भी डायरेक्टली नहीं, अगर इंडेक्स की स्लाइसिंग करने वाले हैं, सी इंडेक्स की स्लाइसिंग करने वाले हैं, तो यू कैन गिव द इंडेक्स नंबर. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में कई बार ये एक कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है और हम उसको देख के कहते हैं यहाँ तो कोई एरर आना है, यहाँ तो कोई एरर आएगा, बिकॉज इट इज नॉट डन. ये नहीं पॉसिबल है. की एरर आएगा? नहीं आएगा. की एरर आएगा इफ यू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, तो आपको एरर दे दिया, मैंने आपको देखा था. बट इफ आई एम गोइंग टू गिव द स्लाइसिंग, अगर स्लाइसिंग आप लेबल से कर रहे हैं, प्लीज, इफ यू आर गोइंग टू डू स्लाइसिंग थ्रू लेबल्स, इट विल वर्क ऑन कॉलम्स. किस पे वर्क करने वाला? कॉलम्स. इफ आई गिव द स्लाइसिंग थ्रू रोज, तो इट विल वर्क ऑन slicing through index number, sorry, so it will work on rows, right? Here slicing through index number, right? Slicing through index number, it will work on rows, it will work on rows index numbers, rows index. I hope you are able to understand this thing. See, हाँ, वन मोर थिंग, 0 colon 1, 0 colon, अच्छा, स्लाइसिंग जब भी हम करते हैं, वेन एवर वी आर गोइंग टू गो फॉर स्लाइसिंग, एंड इंडेक्स नंबर का यूज हो रहा है, इंडेक्स लेबल नहीं. सी, इंडेक्स नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, एंड इंडेक्स लेबल दैट मीन्स वॉट एवर लेबल वी आर प्रोवाइडेड, A, B, C, D, राइट?
तो 0:1 जब भी हम इंडेक्स लेबल नंबर पे वर्क करना है, लास्ट वैल्यू विल नॉट बी, last value will not be, I have put 0:1, that means 0 is there, 1 will not be included. If I see this, see this is the first row, that is 0, so 0 row will printed, that's why the output is A, right? If I write 0:2, see 0:2, so what it will be done, so 0 and 1, A and B column, E and B row must be printed. See, you can see, I hope you are able to understand this thing. See, whenever we are going to write a particular label with the name of data frame in the square bracket, it must be a column label, it must be a column label. If you are going to do for slicing, column labels के साथ slicing नहीं होने वाला है, right? If you are going to do particular column, yes, you can write in a square bracket. If you are going to do for slicing for rows, you have to give the index number, right? Okay, what will be done if I write this? See, print df 0:2. Abhi I have not write column, that means continuous data is not there. See, continuous data is not there. Again it is the error, it is the error. It can be done where यहाँ slicing हो सकती है, but आप अगर चाहें particular rows आपको print करना तो it will not be done. वो कैसे होना है, that I will explain you through log function, through ilog function, that will be done, right? So it will also give you the error, right? Again the key error. I hope you are able to understand. In short, if I want to explain you, see, yes. So it is made clear if you write a name of the data frame and the index label, it will work on your row columns. It will work on your columns. You can provide particular column numbers also. Okay. Next, if you are working on index number slicing, so it will work on row indexes. I hope you are able to understand it properly. एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ. Yes, see, yes, if I write, see, if I write df column p, तो ये क्या करने वाला है, p वाला कॉलम प्रिंट कर देगा, राइट? if I write df, if I have to p and m, तो again I have square brackets p and m, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें. ये लिस्ट है, ये लिस्ट बता रहा है कि p और m कॉलम्स वी हैव टू प्रिंट. ओके, if I write df p:c, sorry, it will give you the key error. कौन सा error देने वाला है, key error. Okay, if I write df 2:4, 2:4, now it will work on row indexes. 2:4 means 2 get printed, 3 get printed, 4, because whenever we are working on index number, so it will never print the last value. Last value will not be included, right? Hope you are able to understand this thing, right? So this is what we called accessing the data frame using indexes, right? Hope you are able to understand this thing. Now we are working on yes, lock. What is lock? See, yes, indexing a data frame using lock. This function select data by the label. This function select data by the label. Label से select करने वाला है. किससे select करने वाला? Labels. I have already told you there are two things, labels and index number, right? Okay. How you will do this? See, अगर मैं log की आपसे बात करता हूँ, df, I'm sorry. Okay. Wait a second. df.log, df is the data frame name. Yes, there are two parts, comma. This first part is defined for row or rows, and second part is defined for column or columns. I hope you are able to understand. First part is defined for rows and second part is defined for columns. Yes. Now अब rows और columns को आप कैसे define करने वाले हैं? See, row, first of all, it is a log, that means it will work on labels, the most important row और column label. इससे पहले हमने एक example देखा, वहां पर row labels was A, B, C, D, E and column label was P, C and M. Okay, so if I am saying for rows or columns, so what can be the option? See, first option is
label name directly, direct label name, direct label name. See, if I write A, P, C, ठीक है, और M, whatever. और सेकंड क्या रहेगा इसी के अंदर? स्लाइसिंग कैन बी डन. स्लाइसिंग कैन बी, स्लाइसिंग कैसे करने वाले हैं हम? P कॉलन C, P कॉलन C और A कॉलन C, रोज और कॉलम जो भी आप देना चाहे, राइट. और एक क्या रहेगा? पर्टिकुलर इंडेक्स, पर्टिकुलर लेबल. पर्टिकुलर लेबल आप कैसे देने वाले हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट में यू विल पुट A, B, D, whatever you want to say, right? And similarly P or M, जो भी आप देना चाहें, right? So there are three df.log, two parts are there, row and column. Again I am saying rows and column, two parts are there. First part will be for rows and second part will be for columns. Okay, rows और columns आप कैसे define करने वाले हैं? Directly you can give a label. Okay, second you can do slicing and third one you can give a particular label A, B, D or P, M, whatever you want, right? These are all are called index labels, index labels, index labels. I hope you are able to. Now I am going to explain you this thing practically. ये कैसे होने वाला है, रो कैसे होने वाली है, कॉलम कैसे सेलेक्ट होने वाला है, राइट? सी, yes. So hope spider is there. Yes. Okay. So how it will be done? See, this I have already got. If I write print df dot loc, what I said, there are two parts. First one is row and second one is for columns. Okay. If rows are there, how many? Which rows are there? A, B, C, D, E. Okay. Suppose if I write A is the row label. Okay. If it is a C, the values of A get printed. A की जो values थी, that is 90, 80 and 70 get printed. That means column label part is optional. C, column label part is optional. If you write A, it will think, because comma नहीं है, comma नहीं है, that means comma से पहले जो भी है that is for row, right? So I can say this column part is optional. Again I am saying this column part is ऑप्शनल. अगर आप ये नहीं भी पुट करते हैं तो जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं दैट विल बी assumed as rows, assumed as rows. Okay, so that means if I write print df dot loc, loc है ये ना डाल, कंफ्यूज नहीं हो, राइट? एक नया फाइल हम लोग, yes. If I write print df dot loc, if I write a, अब a यहाँ किसके लिए वर्क कर रहा है? बिकॉज फर्स्ट पार्ट इज फॉर रोज, तो a रो की जो भी वैल्यूज हैं दैट विल बी गेट प्रिंटेड. ओके, दैट वी हैव अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंट इफ आई राइट df डॉट loc. अभी मैं रोज पे वर्क कर रहा हूँ, राइट? एक पार्ट तो ये हो गया, रोज का डायरेक्टली इंडेक्स दे दिया. नाउ नेक्स्ट इज स्लाइसिंग. अभी अभी हमने देखा df डॉट लॉग a कॉलन b, a कॉलन या फिर a कॉलन c. तो दैट मीन्स a से लेकर c तक जितनी वैल्यूज हैं, रोज हैं a टू c, इट विल गेट प्रिंटेड. c, yes, c, a, b, c, three rows are get printed. This is called slicing, as I already told you. Yes. Now if I have to do print df dot loc, okay, loc के अंदर मैं लिखता हूं मुझे सी रोज प्रिंट करनी है, ए, सी और ई. सी, ए, सी और ई कंटिन्यूस नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूस, राइट? तो व्हाट यू विल डू, अगेन अ लिस्ट ए, देन yes, comma c, yes, and then comma e. Okay, when I print it, see, a, c and e, here continuous a, b, c, here a, c, e. That means random column rows I am selecting. I hope you are able to understand. Three things you have to understand. You are able to understand. First is a particular row. Second is slicing, means continuous rows, and third one is particular rows, not a single row, multiple rows you can get. This is all about rows and log, right? If I write print, if I go for columns, see, print df dot log. First part is for row,
इट इज मैंडेटरी टू मेंशन, अगर आप डायरेक्टली कॉलम करेंगे तो भी वो रो पे कंसीडर करेगा। सपोज इफ आई राइट पी, पी क्या कॉलम नेम है, राइट? So when I go run this, it will give you the key error. Why it is key error? Because first part is for rows and no rows name has p. So that means row part need to be mentioned. But मुझे row part चाहिए ही नहीं, मुझे rows सारी ही चाहिए, but a particular column. So for that case you have to write column. This column means all the rows. See, first part is for column, row. I have put the column. That means all the rows. And P, P is what we call column, right? So for P column, all values get printed. You can see, right? For P column, all values get printed. This is how you can access a particular column. वैसे हम डायरेक्टली भी कर पा रहे थे, लास्ट अभी हमने देखा, राइट? अभी यहाँ पे स्लाइसिंग करने वाले, राइट? P column, here it is possible. वहां पे वो स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं था, यहाँ पॉसिबल है. यू कैन सी, yes, P and C, you can see, right? P and C columns are printed. All rows are get printed because I have put the column. Okay, then I have to print df dot loc particular column. Suppose yes, first part is for row column, next part is particular column, that is suppose P and M. Okay, P and C, P and M column got printed. So this is what we call lock function, loc. First part is for row and second part is for column. Okay, now we are getting a particular value from a particular row and from a particular column. See, एक particular value, एक particular cell को मैं देखना चाह रहा हूँ. Suppose मैं क्या, what I want in this list, I want the physics या maths marks of student C. Please print df dot loc. I want the maths marks of student C. C is what label. So first I have to do the label, then comma. Which value I want? M. M means maths marks. Okay. Then I got printed C, 74 marks here. You can see in the this also maths A B C, C got 74 marks, right? So I have got the particular value. I have got the particular. अभी मैंने क्या किया, रो भी मेंशन कर दिया as well as column. तो एक particular value we can get. I hope you are able to understand what is lock, how it will work. First part is row and second part is column. Most important, CBSE में बहुत से questions होंगे, output आएंगे जहां आपको use करना है इसको, right? चलिए, if I write now all the things we have done, right? आप slicing की बात करें और particular column की बात करें, the same can be done on rows and column. कैसे? See, if I write A column C, that means A to C columns. Okay, I'm sorry, A to C columns, then column, rows. I want row column must be P to C, P to C. The A to C तो rows हैं and P to C है columns है. तो row 3 rows will be there, A B C. Okay, and A B C 3 rows are there and 2 columns P and C. You can see, right? The particular rows and particular columns using slicing, right? Okay. Again, if I write print df dot loc square bracket, now comma, before comma row part is there, again a square bracket for a particular row. Suppose row is A and E. Okay, after column I will write the column level, suppose that is P and M. Continuous नहीं है, continuous के लिए हमने यूज किया था slicing, that is column. अभी particular rows हैं, that is A और B, A must be the row and P and M must be the column. See, this is what we call lock function. I hope you are able to understand. A particular label, then slicing, then rows, then columns, then row and column both, right? So this is called lock function and it is used for a particular it is used for slicing or get a particular data, a set of data from a data frame. Because आज आपका जो data frame that is a small, right? Suppose there is a data frame contain 5,000 students detail, right? So to fetch a particular detail we can use for log, right? This is what we call log. Similarly there is a function, I'm just explaining you. See, yes, wait a second. Okay, similarly there is a function that is called ilock. What is the use of ilock? See,
Again, this is also same. Df dot ilog. It is work on rows. First part is rows and second part is column. But the most important thing when we are working on ilog, we are working on index numbers. पहले हम किस पे काम करने वाले थे? इंडेक्स लेबल पे. अभी किस पे काम करने वाले? इंडेक्स नंबर, राइट? तो अगर आप रोज और कॉलम्स की बात करेंगे, इफ यू आर वर्किंग ऑन रोज एंड कॉलम्स, that means first part is a particular index, a particular index, okay, like 0, 1, 2, right? Or next is a particular index, or you can say uh, series of index, series of index, like 0 colon 2, 0 colon 4. Or next is particular indexes, particular index numbers, right? 0, 1, that must be in square. सेम है, वही चीजें जो अभी हमने करा, बट यहाँ पे क्या होने वाला? इंडेक्स नंबर. देयर वी हैव यूज्ड अबाउट द इंडेक्स लेबल्स, हियर वी आर यूजिंग अबाउट द इंडेक्स. सेम थिंग वी विल डन. सी, अभी मैं इसकी बात करता हूँ. सेम वी आर वर्किंग. सपोज प्रिंट df डॉट आई लॉक. हमने a यूज किया था, राइट? लास्ट टाइम पे सेम आउटपुट विल डू, राइट? तो a मींस इंडेक्स नंबर 0. a means index number 0. Yes, you can see this. Index number 0 is there, right? A value will be same. That means जहां आप index label use कर रहे थे वहां index number use करिए, remaining are same. I log a colon c है तो a is what? 0 और colon c means 2. Now there is a difference. जब भी आप slicing करने वाले हैं, whenever you are going to do slicing, last index value will not be included. If you write 0 colon 2, that means 0 and 1. A और B will printed, C will not get printed. C भी आपको print करना है, that means a plus 1 value should be there. That means 0 colon 3. So 0, 1 and 2, A, B and C get printed. You can see this. See, A, B and C get printed. I hope you are able to understand. जो मैंने वहां किया था, whatever thing we have done there, that will for log. Same thing I am doing for I log, right? Printf A, C और E. So again df dot I log A, C and E, right? A means 0, comma C means 0, 1, 2, yes, or E means 4. So these three indexes got printed. You can see A, C and E. So whatever things we have done through labels, जो हम labels पे काम करने वाले थे, किस पे कर? Index numbers पे. Then what is the use of index number? जब labels थे तो index number का क्या use है? See, I am just explaining you. Suppose a data frame contain 4000 elements. I am not able to remember all the index labels, but index numbers are fixed. The first one is 0, second one 2, 3, 4. That's why when there is a last set of data and we don't know about the particular index labels, we don't remember about particular index number, so we will go for index index label, right? So we will go for index numbers because index numbers are fixed, that will start from 0. Okay. Similarly, you can go for all iloc functions, right? So this will be iloc. Iloc will work on index numbers, and this loc is used for index label. I hope you are able to understand this program. I will share with you in the notes part. You can see this, right? Similarly, if I go for next program, next line, see, print df dot. What we can do is, I just write this part in the next line, so you are able to understand properly. Yes, कि हाँ ये lock है, इसी का replacement यहाँ पे I lock है. This I have to do actually. See, print df dot I lock. See, colon, okay. P means 0 row. Same output will be there. I am saying same output will be here, right? Similarly, oh, I am sorry. Again, I am writing this one. Print df dot lock की जगह क्या आ जाना हमारे पास? I lock colon, okay. P means 0, yes. C means 1 है, but we have to write 2. Why?
because last value will not be get included. I hope you are able to understand this, right? Df dot lock p comma m. Again I am writing. So for p the index number is 0 and for m the index number is 1, 2 actually, right? बस जहां कंटिन्यूस वर्ड आ जाए वहां पे आपको यूज करना. अच्छा, df डॉट लॉग c कॉमा m. c will be at index number 012. okay, थर्ड पोजीशन बट इंडेक्स नंबर 2 रहेगा. pcm will be again 2. okay, i lock. I am saying i lock. जहां जहां हम नंबर का यूज कर रहे हैं we have to work on i lock. see this is called i lock, right? तो लॉक का रिप्लेसमेंट क्या हो गया आपके पास? i lock हो गया. सेम आउटपुट विल बी देयर. मैं आपको जस्ट यही प्रिंट करने वाला हूं. सी df डॉट लॉक की जगह किसका यूज करना है? आई लॉक. ओके, जहां ए कॉलन सी है, ए कॉलन सी की जगह क्या हो जाना है? 0, बिकॉज सी 3 है. ए बी सी 0 1 2, तो आई हैव टू राइट 3 बिकॉज one more value should be there. P and C, so 0, C is what? PCM 0 1, so I have to write 2. एक इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, right? That I have already explained. Now I have to write df dot ilock. A colony, that means 0 comma 5. okay, and P comma M, that means 0 or M is column number, I think 2. yes, just run this program. You can see all the outputs are same. okay, positional indexes out of bond, कहीं एक error है. see here it is. again I am running this. you can see this, right? 0. हाँ, यहाँ एरर क्यों था? सी मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसके अंदर, बिकॉज आई राइट 0,5. अब जो आई लॉग है, फर्स्ट पार्ट इज रो, रोज आर ए बी सी डी ई, 0 1 2 3 4. आई हैव राइट द इंडेक्स नंबर दैट इज 5, इसलिए उसने एरर दे दिया इंडेक्सिंग का, आपका पोजीशन का, बिकॉज वो पॉसिबल है. नाउ सी this these two outputs are same, these two outputs are same, these two outputs are same, these two outputs are same. the last two outputs are same because lock और ilock दोनों में हमने same function operation perform किया है. तो I hope you are able to understand कि lock और ilock में first part that is for row and second part is for column. पर्टिकुलर लेबल दे दो, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर दे दो, स्लाइसिंग ऑफ लेबल कर दो, स्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स कर दो. बट इंडेक्स नंबर की स्लाइसिंग में एक वैल्यू ज्यादा देनी है बिकॉज लास्ट वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड. एंड पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर दे दो इन स्क्वायर ब्रैकेट, लेबल्स दे दो, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर दे दो इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? तो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉक एंड आई लॉक. बड़ा ही हल्का सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है सीबीएसई का 12th का डेटा फ्रेम में जब हम एक्सेस करते हैं, बट नाउ यू आर एबल टू एक्सेस all the values, I thought, right? Or I hope you are able to understand this, right? Yeah. Now we will move to the next topic. Lock and iLock we have done. This program I will share you soon, right? This data frame, yes. Now the important thing is how to add a row. How to add a row? Yes, because there is a data frame. तो data frame में हमें क्या चाहिए? Row भी add होना चाहिए, column भी add होना चाहिए, row delete भी होना चाहिए, right? So how it will be done? See, I will explain you this thing. Yes. एक नया प्रोग्राम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं. tf lock and ilock dot py. I already told you I have to write py. Why py? Because it is a Python file. चलिए, we will move for the next. How to add a row, how to add a column, how to delete a row. yes, data frame हमारा create हो चुका. अब हमें row add करना है. see, I have to add a row. कैसे row add करने वाले? ठीक है, let's see. देखिए, row means a particular value, set of value I have to run. अगर यहाँ डेटा फ्रेम की मैं बात करता हूँ, सपोज इफ आई एम रनिंग, सी दिस इज द रोज, दीज आर द 5 रोज ए बी सी डी. मुझे एक रो ऐड करना है, राइट? आपको पता है व्हेन वी आर वर्किंग ऑन डीएफ डॉट एलओसी, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी काम इसी से होने वाला है. डीएफ डॉट एलओसी, राइट? आई हैव टू ऐड अ न्यू रो दैट इज एफ, राइट? एफ. अगर मैं ई लिखता दैट मीन्स ओल्ड जो ई रो है उसको मैं अपडेट कर देता. डीएफ डॉट कॉलन ई एफ, एफ मीन्स न्यू रो.
I am to not to write any column, right? Equals to set of value आप लिस्ट में लिख सकते हैं, you know, 5 values we need. Suppose I have write 72, 78, 58, 69 or 92. These are the marks, right? If I write the print df, you can see this. Cannot set a row with mismatched columns. Why it is mismatched column? 1, 2, 3, 4 and 5. Yes, there is a problem. I'm just going to explain you. See, df.lock I have to, f is what we call row number, row label, right? But we have not mentioned the column, right? So I have to write the column. I have to write the column. Why it is column? So see, how many columns are there? Acha, one more thing is there. One mistake we have there. The 3 marks only. See, yes, you can see this. I have actually put the 5 values, but every column contain 3 row contain 3 values only, right? So df.lock f is the row name, and 72, 78, 76, these 3 value I have to put, right? So this is how you can add a row. मैंने एक रो को ऐड किया है, ऐड अ रो इन df डेटा फ्रेम में रो कैसे ऐड करने वाले, df.lock label of low 72, 78 and 70, 96. This is how you can add a, you can update also. So see, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ df.lock e, e already is there, you can see e already column है जिसमें values है 80, 95, 48, right? So what we can do is 82, 97 or 15. Suppose if I write print df, अभी नया रो ऐड नहीं होने वाला, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रो है उसको एडिट कर दिया. सी 82, 97 and 50. If you put a new row label, it will get the add a row. अगर आप already existing दे रहे हैं तो it will modify a row. See, it will modify a row in df. I hope you are able to understand how to add a row and how to add a modify a row. Now the next is how to add a column. आपको पता है, if I write df.loc, अच्छा one simple thing is df square bracket, because square brackets में जब भी आप लेबल लिखते हैं तो आपको पता है कि लेबल किसका होता है, कॉलम का होता है. वी नो. Suppose one more column is there, suppose bio b. Okay, now I have to put the values. How many values are there in a column? कितनी values है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rows है, तो 6 values must be there. 45, 48, 98, 78, 65 and suppose 67. If I get printed df, print df, see, नया रो कॉलम ऐड हो गया, न्यू कॉलम गेट ऐड अ न्यू कॉलम, नया कॉलम हमने ऐड कर दिया यूजिंग डायरेक्टली. यहाँ भी हमने लॉक का यूज नहीं किया, बिकॉज डीएफ के अंदर व्हेनेवर यू राइट अ कॉलम लेबल, व्हेनेवर यू राइट अ लेबल, दैट लेबल मस्ट बी ऑफ कॉलम. कॉलम का लेबल होता है, दैट वी नो, राइट? इफ आई राइट df.loc square bracket, first part is row, leave all rows I have to add, right? Now I have to add a column, that is suppose English, that is for e e कर देते हैं या eng कर देते हैं, that is okay. हाँ, तो how to add a column? See, df.lock colon means row label, eng what we call a column is there. Suppose 5, 6 values I have to put. So suppose 48, 52, 58, 96, 78, 87, 85. 6 values I have put, right? Again I have to print df, yes, print df. जैसे मैं लिखता हूँ, see, एक और column मेरा ऐड हो गया. So two methods are there. So either you can do this from this or you can do from lock also, right? Lock से भी आप कर सकते, add a new column using lock, right? This is how you can add a column. Modify कैसे करेंगे? बहुत easy है सर. df p, right? df of p means p is the column name equals to, suppose df of p the what I did here is df of p equals to df of p plus 5. अभी मैंने क्या, जो भी वैल्यूज थी उसमें 5 ऐड कर दिया, बिकॉज डेटा फ्रेम पर वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है. मॉडिफाई वैल्यूज, मॉडिफाई, मैंने एक्सप्लिसिटली वैल्यूज नहीं किए,
वैल्यूज ऑफ अ कॉलम, मुझे एक कॉलम के सारी वैल्यूज को 5 से इंक्रीज करना था, फिजिक्स के सारे मार्क्स को मॉड्यूलेशन करके 5 मार्क्स मैंने बोनस दे दिया, राइट। तो क्या किया, डीएफ ऑफ पी, दैट मींस पी जो कॉलम की वैल्यूज है इक्वल टू डीएफ ऑफ पी, पी कॉलम की वैल्यूज प्लस 5। तो जितना भी वैल्यूज थी फिजिक्स के पहले मार्क्स से 90, 91, 82, these all are get added by or increased by 5, right? So this is what we call modify values of a column. So we have added a row, we have modified a row, we have added a new column, simple method. We have added a new column using lock, we have modify values of a column. Particular values भी आप दे सकते हैं, मैंने directly 5 add कर, right? 5 add कर दिया, subtract कर दिया, that all can be done, right? I hope you are able to understand this thing. Now how to delete a row or column. हमने row add कर दिया, ठीक है, column add कर दिया, that is okay. Row is added, column is added. Now I have to delete a column or delete a row. How you will do? See, to delete a row column, I have to write del. A keyword is there, right? Del. I have to write df. Df is the name of data frame. Suppose अभी जो मैंने column add किया था eng English, इसको मैं remove कर रहा हूँ. df of right, remove या delete a column, right? This all notes I will share. मैं आप सभी के साथ share कर दूंगा ये सारी, ठीक है? Right, df. If I print this, see, you can see this, right? eng column is got deleted. हो गया नहीं? Okay. Now I have to delete a particular row. उसके लिए क्या यूज होना है? df dot drop. df dot drop. Drop क्या करने वाला है हमारे पास? df or drop will delete a particular row. Suppose I will delete a c. C is what? Row name. Row level. df dot drop. Okay. Now I have to mention axis. X is equals to 0 और x is equals to 1. See, अब मैं आपको बताता हूँ axis क्या होता है. Suppose x is equals to 0 मैं लिख रहा हूँ, तो what will be done? See, df dot drop. बट यहाँ ड्रॉप नहीं हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ. अगर आपको ड्रॉप करना है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू. इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, इट इज रिक्वायर्ड. इफ आई राइट प्रिंट df now, see what it will be done. See, a b c column got printed, right? So what is this indexes actually? इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. बेसिकली अगर हम एक्सेस की बात करते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, when we are working on any data frame, see, in this data frame, this column is called x is equals to 0 and I am sorry, actually these are the rows. The rows are called x is equals to 0 and columns is for x is equals to 1. yes, तो जब भी आप x is equals to 0 लिखेंगे, हम rows की बात करें, क्योंकि एक लॉजिक याद करें, जैसे हम डेटा फ्रेम में जाते हैं सबसे पहले क्या आता है? रोज, तो दैट मींस x इक्वल 0, और ऊपर क्या आती है बाद में, क्या आता है? कॉलम, तो दैट इज पहले 0 आना फिर कौन आना. बस जस्ट अ ट्रिक, राइट? नॉट अ मैजिक, राइट? ओके, तो डियर डॉट ड्रॉप सी. सी इज व्हाट वी कॉल कॉलम रो लेबल. x is equals to 0 because rows are there, and in place equals to true we have to mention. So this is how you can delete a row. Delete a row. Okay. Next is how to delete a column. df dot drop. सपोज मैं b कॉलम को डिलीट करने जो बायोलॉजी में बनता है, x is equals to 1 exactly. Now I have to print df. yes. अच्छा, वन मोर थिंग इज देयर. सपोज मैं डेटा फ्रेम में डिलीट तो करना चाह रहा हूं. I want to create a new data frame. I want to create a new data. I have to drop the b value, but existing data frame में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए. न्यू डेटा फ्रेम बना दो, तो उसमें आप इन प्लेस रिमूव कर दो, राइट? तो आई विल राइट df1 इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप. एक नया डेटा फ्रेम बनाया df1. df डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है? b. एक्सिस क्या करना है? 1. अभी मैं df को भी प्रिंट करता हूँ और df1 को भी प्रिंट करता हूँ, क्या डिफरेंस होगा आप देखिएगा प्लीज. सी, अगर df की बात करूं तो इसमें b अभी भी कॉलम है, बट df1 में से उसको रिमूव कर दिया. दैट मीन्स हमने रो पर्टिकुलर कॉलम डिलीट तो कर दिया. आई हैव ड्रॉप द पर्टिकुलर कॉलम, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आई हैव ड्रॉप दैट कॉलम, बट आई हैव नॉट बेसिकली डिलीट इन दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रेम. हमने एक नया डेटा फ्रेम बना दिया, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉप अ पर्टिकुलर रो, राइट? Add drop row and column. Add
इसको सेव कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए, ड्रॉप रो और कॉलम dot py in data frame. Okay, I hope you are able to understand this thing, right? This is how you can do this. So now today what I have discussed with you, how to add a column, how to drop a column, how to add and modify value of row, how to modify value of column. दिस इज और एक तो डेल हमने यूज किया, एक ड्रॉप फंक्शन से आप रो भी डिलीट कर सकते हो, कॉलम भी डिलीट कर सकते हो, राइट? सिमिलरली टू एक्सेस द वैल्यू आई हैव यूज लॉक और आई लॉक दैट वी हैव डन, राइट? और एक पर्टिकुलर वैल्यू डायरेक्टली आपको एक्सेस करना है तो एक कॉलम लेवल से भी एक्सेस, राइट? So that's the things we have discussed till now, right? Row addition we have done, column addition, that all we have done, right? Yes. Okay. I thought one topic we can take more. Yes. So today what we have discussed, yes, I have to revise this thing. First, I have discussed about what is data frame indexing, right? इंडेक्सिंग में हमने दो चीज डिस्कस किया बेटा, इंडेक्स नंबर एंड इंडेक्स लेबल्स। ओके, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग वी हैव डन। आफ्टर दैट वी हैव एक्सेस द डेटा यूजिंग लॉक, वी हैव एक्सेस द डेटा यूजिंग आई लॉक, वी हैव एड कॉलम और मॉडिफाई कॉलम और डिलीट अ कॉलम। अच्छा, same for row, same for row, and same for row. These all are things we have discussed till today, actually, right? So these are the topics we have covered so far. Remaining parts of data frame, that means merging and multiple operations are there, that we will discuss soon. Right. So that's all for today, students. In next video, I will discuss your remaining topics of data frame. Soon, in one or two videos, we will able to complete this data frame part. I hope you are able to understand this. If you like this video and if you want all the videos of IP and CS of 11th and 12th IP, just subscribe my channel IT Concepts. And if you have any issues, you can comment or email me. My email ID is itconcepts3442@gmail.com. So I will give you the video also, right? So you just go through this video. You are able to understand log, ilog, modify, and all. Right? That's all for today. Thank you so much, students. Have a good day.